Hello students, in this class we'll discuss few questions of exercise 4.2. This is related to properties of determinant. Now here is one question. Number 1 is this. Can you write like this? By the property x, y, z, a, b, c, x, y, z. एक प्रॉपर्टी होता है ना, अगर एक रो या कॉलम के एलिमेंट्स एडिशन फॉर्म में है तो आप उसको दो डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख सकते हो, सम ऑफ द डिटरमिनेंट्स. कैन राइट लाइक दिस x, y, z, a, b, c और ये a, b, c. Is it clear? This is by property number 5. I have already explained to you. Okay. Now see here. This column number 1 and column number 3. All elements of column 1 and 2, 3 are same. It means identical. Then value of the determinant will be 0. Similarly here, column 2 and column 3 are identical. Value of the determinant will be 0. So 0 is the value of this question. Question number 2 is here. Can we use this operation C1 plus C2 plus C3? It means C1 कॉलम में मैं ये चेंजेस कर रहा हूँ. देखिए एडिशन में क्या होगा, एक्चुअली क्यों किया, रीजन देखिए. A पॉजिटिव है, नेगेटिव भी है. B नेगेटिव है, पॉजिटिव भी है. C नेगेटिव है, पॉजिटिव भी. सिमिलरली इन बोथ. So A minus A 0, minus B plus B 0, minus C 0. So 0. Similarly here 0 and here also. It means column number 1 में सारे elements 0 है. And we know that if all elements of any row or any column are 0, then the value of the determinant will be 0. This is very small questions related to properties of determinant. Now question number 7, first part. This is the left hand side and this is the right hand side. We have to show that 4a square, b square, c square. Now this is the left hand side. See here, in row number 1 a is common, in row number 2 b is common, in row number 3 c is common. So taking out a, b, c common from r1, r2 and r3. a, b, c. देखिए कॉमन लिया तो क्या बचा, माइनस a, b, c. यहां से b कॉमन लिया तो a माइनस b, c. ओके, इधर से वापस c कॉमन लीजिए, a, b, minus c. You can see again is a common a, b, c in column 1, 2, 3. So again taking out a, b, c common from column 1, column 2 and column 3. So a square, b square, c square. a, b, c पहले ही है, a, b, c और आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, a, b, a square, b square, c square. Minus 1, 1, 1, 1 minus 1, 1, 1, 1, minus 1. Can see जब a जाएगा तो क्या बचेगा भाई, b और c. Okay. Now expanding along any row or any column. Now I am expanding along row number 1. Minus 1 as it is. Plus 1, minus 1. Now next step. Minus 1. This side. Minus 1, minus 1. Now last step. 1 plus 1. You can see here 2, minus 2, minus 1, plus 2, 2, 2, 4 and 0. So there is 4 a square, b square, c square. This is the right hand side hence proved. Okay. This is question number 7. So we can take any common element from any row or from any column. Similarly the next or other questions, if there is any common element, किसी भी common element को आप easily common ले सकते हैं, लेकिन एक रो में से at a time तीनों लेना है आपको, तीनों कॉलम तीनों रो में से, तो इस फॉर्म में लेना है.
ए फर्स्ट में से, बी सेकंड में से, सी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप अगर तीनों में कॉमन है ए और ए की बार ए लिख रहे हैं ना, उस कंडीशन में आएगा ए इंटू ए। यहां पर ए बी सी था इसलिए ए बी सी, इसलिए डिफरेंट दिख रहा है। ओके, now this is a question number 8, first part. Left hand side is 1 1 1 a b c, a square b square c square, and right hand side we have to show that this determinant is equal to a minus b minus c minus a. So start from left hand side. See, here is 1 1 1 is here. Now we want three factors, a minus b minus c minus a. One by one factor बाहर लाने की कोशिश करिए। कैसे देखिए, a minus b minus c, we can easily find out. Otherwise we can say b minus a or c minus a. We can take negative as a common and after that we will see. Now I am operating two operation here, r2 or r3, changes in r2 and r3. So operation in r2 is r2 minus r1, r2 minus r1, and r3 minus r1. I am using r1 as a common in both rows. So R2 R3 में चेंज कर रहे हैं, R1 में कोई चेंजेस नहीं, तो R1 के एलिमेंट्स एज इट इज और R2 R3 के आफ्टर ऑपरेटिंग। सो फर्स्ट रो एज इट इज 1 a square. Now in the second row R2 minus R1, 1 minus 1 0, b minus a b square minus a square. In R3 minus R1, 1 minus 1 0, c minus a c square minus a square. Okay, now see here, b minus a, can we take negative as a common because our factor is a minus b, so taking out negative as a common only in this element. And similarly here negative, also the factor is a square minus b square is a minus b or a plus b. Okay, c minus a as it is, there is again use the property c minus a c plus a. Now see, a minus b is a common in R2, so taking out c minus a is a common from R3, so taking out is a common, we will get this one. Now there is a two zeros in this column number 1, so expanding along column number 1 we will get this answer a minus b minus c minus a. It means ये भी ध्यान रखना है, जिस रो या जिस कॉलम में ज्यादा जीरोस होते हैं वहां से एक्सपेंड करते हैं। ये बात स्टार्टिंग में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। जैसे इस कंडीशन में कॉलम नंबर 1 में दो जीरोस हैं, अगर आप एक्सपेंडिंग इधर से करते हैं फर्स्ट रो से या किसी अदर कॉलम और रो से, तब भी आंसर ये आएगा। बट कैलकुलेशन अगर इजी बनाना है तो टाइम सेव करना है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, उस कॉलम या उस रो को पकड़िए जिसमें नंबर ऑफ जीरोस ज्यादा है। ओके, सो दिस इज द 4.2 एक्सरसाइज विथ प्रॉपर्टीज। ओके, थैंक यू वेरी मच।